Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello students, join our online course for GPAT Niper Drug Inspector to get assured amazing rank. Hello my dear students, welcome back to the Fundamental Pharmacy. If you are preparing for GPAT Niper Drug Inspector Government Pharmacist exam, then this video is going to be very important, knowledge oriented and useful for your preparation. So it's my request to you, please watch this video until end. My dear students, in this video we are going to see classification number 15, that is nothing but the anti-arrhythmic drugs or drugs used in the treatment of arrhythmia. So this classification is very important, and lot of times they have already asked question on this, and believe me, this year also probably there will be a question on this part. You should remember anti-arrhythmic classification. My dear students, first of all you should know what do you mean by arrhythmia. तो arrhythmia होता क्या है? तो arrhythmia मतलब क्या है? Arrhythmia is nothing but a rhythm. So there is a disturbance in the rhythm of your heart. Now what is a rhythm of your heart? That is known as a sinus rhythm. Now what is the sinus rhythm of your heart? So ideally your heart should beat 70-72 beats per minute. आपका जो दिल है 70 से लेके 72 बार तक एक मिनट में धड़कना चाहिए. So that is known as a sinus rhythm of your heart. Now if अगर आपका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, जैसे होता है ना कि जिससे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, जन्नत की कोई हूर नहीं, कॉलेज की एक लड़की. सो जब लड़की देखते हो तो आपका दिल धड़कता है. सो इफ योर हार्ट इज बीटिंग मोर देन नॉर्मल, दैट इज नोन एज अ टैकीकार्डिया. इफ योर हार्ट इज बीटिंग less than normal, that is known as a bradycardia. Now but ये दिल धड़कता कैसे? How there is a beating of your heart? So there is a electrochemical changes in your heart, that is known as electrophysiology of your heart, electrophysiology of your myocyte, electrophysiology of your myocardium. So contraction of myocardial muscle. So what happens during the resting phase? As you can see over here, so this one is known as the resting phase. So this heart beats continuously. It is not under voluntary control, so it is under involuntary control. It has some sort of autonomy. Automatically अपने अपने रिदम में धड़कता रहता है. So normally जब धड़कने का प्रोसेस कैसे होता है? During the resting phase, so sodium ions get entry inside the cell of myocardium. What is the inside potential of myocardium? It is around minus 120 minus 140 millivolt. So upon entry of sodium is nothing but the positive ion. So there is a depolarization. So that's why this phase 0 is known as a rapid depolarization. Phase 0 is known as a rapid depolarization. After that, along with this sodium, calcium will also goes inside in the late phase of phase 0. At this point, sodium ion channel is closed and potassium channel ion opens. So potassium will move in from inside the cell to the outside cell, and chloride will move from outside cell to the inside cell. Okay, so यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए सोडियम इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, क्लोराइड इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन, तो पोटेशियम इज नोन एज इंट्रा सेलुलर कैटायन. पोटेशियम इज नोन एज इंट्रा सेलुलर कैटायन. You have to remember. Now at the phase first, sodium channel will be closed, potassium channel will be open, and chloride channel will be open. Okay, so that will result in the quick repolarization. So that is known as a phase 1, known as a quick repolarization. तो यहाँ पे क्या डिस्टर्ब हो रहा था आपका इनसाइड पोटेंशियल, तो उसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे. अभी यहाँ पे कुछ हद तक उसका रिगेन हो गया तो उसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन. सो क्विक रिपोलराइजेशन फेज 1. नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ प्लाटू लेवल, दैट मींस स्लो डीपोलराइजेशन. दिस इज नोन एज अ स्लो डीपोलराइजेशन और स्लो रिपोलराइजेशन. ओके, दिस इज ड्यू टू द स्लो लीकेज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, दैट इज नोन एज अ स्लो कैल्शियम करंट. नाउ आफ्टर दैट this is phase 3, known as a rapid repolarization, due to rapid efflux of potassium from inside to the outside. And last phase is known as a complete polarization of your heart, complete restoration of normal electrophysiological parameter. So complete repolarization, or that is known as again phase 0. At this phase, this is a normal. So normally क्या होगा कि सोडियम अंदर जाएगा, बाकी सब ये सब phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. That is a one cycle. Once this cycle is completed, there is a one contraction and relaxation. Okay. Again, this cycle will continue.
how many cycles per minute are there in a normal heart? So it is around 70 to 72 beats per minute. Now if there is an increased or decrease, so that is known as a disturbance in the rhythm of your heart, known as a arrhythmia. You can see phase 0, phase 1, phase 3, okay, like that. It is known as a your ECG, electrocardiogram of your PQRST. Okay, what are the anti-arrhythmic drug? So remember, anti-arrhythmic drug, they are nothing but the cardiac depressant drug. They will depress the electrophysiology of your heart. So they will prevent the extra beating or beating of your heart. Most of the time it is extra. So it is an increased heart rate. Okay. So class 1 drug, they are known as a calcium channel blockers. In that also you have different subtypes, class 1A, class 1B, class 1C. So class 1A, they are known as a moderate sodium ion channel blocker. So they will block the entry of sodium ion in the phase 0. Class 1 sodium channel blockers, in that also class 1A, moderate sodium channel blocker, quinidine and procainamide. Then class 1B, they are known as a weak sodium channel blocker, lidocaine and phenytoin. Class 1C, they are known as a strong sodium ion channel blocker, flecainide and propamine. Now class 2 drugs, they are known as a beta blockers. Class 2 drug, they are known as beta blockers. They will act on a phase 4 of your cardiac cycle. Okay. Then class 3, they are known as a potassium channel blockers. So example is amiodarone and satolan. They will block the phase 3 of cardiac cycle. Now this class 4, they are known as a calcium channel blockers like verapamil, latiazem and other nifedipines and all that. So they will block the calcium ion entry, L type of calcium ion. Now different types of arrhythmia. So mostly tachyarrhythmia are there. Tachyarrhythmia means increased heart rate than normal. So tachyarrhythmia are of two types. Mostly first one is isolated or non-sustained. Isolated non-sustained मतलब ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं, ज़्यादा देर तक रहता नहीं, non-sustained. Isolated non-sustained. It is due to the premature complexes. तो इसमें भी दो आता है. आर्टेरिया में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आर्टेरियल tachyarrhythmia. Usually it is not treated. Treatment is not required for arterial tachyarrhythmia. Isolated arterial tachyarrhythmia. Then ventricular tachyarrhythmia, that is nothing but the ventricular extra contraction will be there. So in healthy person there is no treatment required because अगर आपने कोई थ्रेड दिख ले तो आपका दिल जोर से धड़कना चाहिए. That is a normal one. It does not require treatment. And ventricular tachycardia after myocardial infarction, after acute myocardial infarction, that needs a treatment. Then sustained. Sustained मतलब क्या कि ये बहुत देर तक रहेगा. ये नॉन सस्टेन मतलब क्या, ये होगा थोड़ा बहुत चेंजेस आपके हार्ट के रिदम में, लेकिन वो नॉर्मल हो जाएगा. अगर सस्टेन है, अगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलेंगे सस्टेन. तो उसमें बहुत सारा टाइप आता है. सो इन दैट यू आर डिफरेंट टाइप लाइक साइनस टैक्कार्डिया. इट इज मोस्टली ड्यू टू फीवर एंड थायरोटॉक्सिकोसिस. थायराइड का अगर ज्यादा लेवल हो गया तो टैक्कार्डिया होता है, या फिर फीवर आ गया तो टैक्कार्डिया होता है. एक हो गया साइनस टैक्कार्डिया. दूसरा होता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन. साइनस टैक्कार्डिया मतलब क्या, नॉर्मल हार्ट बीट कितना है, 72 beats per minute. So if your heart is able to beat around 100 beats per minute, that you can call it a sinus tachycardia. Now if your heart beats more than 150 beats per minute, that is known as arterial fibrillation. So around 150 to 200 or 250 beats per minute, that is known as arterial fibrillation. So अगर आपका दिल 200 से 250 के स्पीड से धड़ रहा है तो उसको बोलेंगे arterial fibrillation. If your heart is able to beat more than 300 beats per minute, that is known as arterial flutter. This one is a paroxysmal ventricular tachycardia. It is due to the increased arterial contraction due to the blockage in the arterioventricular node. जो AV node होता है आपका हार्ट, उसमें अगर ब्लॉक हो गया, सर्कस एंटी टाइप ब्लॉक अगर हुआ है तो paroxysmal supraventricular tachycardia वही हो गया PSVT. Then ventricular fibrillation और and flutter. तो यही वेंट्रिकल का अगर आपका नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट 150 से लेके 300 तक गया तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. अगर मोर देन 300 वेंट्रिकुलर फ्लटर. WP वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये इट इज टाइप ऑफ अरिथमिया, वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमिया. एंटी अरिथमिक ड्रग क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लासिफिकेशन याद रखना है. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है. वी आर गोइंग टू सी ऑल द क्लासिफिकेशन. ये सभी क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपके सामने है तो सभी देखेंगे. एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखो. क्लास 1 ड्रग्स, दे आर नोन एज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स.
क्लास 1 ड्रग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. इन दैट यू हैव three subclasses, class 1A, class 1B, class 1C. So class 1A is they are known as a moderate, okay, moderate sodium ion channel blocker. So they will moderately decrease the slope of phase 0. ये थोड़ा ही डिक्रीज करेंगे स्लोप. उसमें आता है क्विनिडीन, प्रोकानामाइड, डिसोपायरामाइड, प्रोकानामाइड एंड क्विनिडीन. तो यहाँ पे सिंपल है, अमाइड्स जो है अमाइड्स, तो अमाइड जो है वो क्लास 1A में आएगा, अमाइड्स एंड क्विनिडीन. ठीक है, क्विनिडीन अमाइड्स ये क्लास 1 में आएगा. बी में क्या आएगा, क्लास 1B में. सो क्लास 1B दे विल लिटिल डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0. सो उसमें आएगा लिडोकेन एंड मैक्सिलेटिन. सो लिडोकेन मैक्सिलेटिन इट विल डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0 लिटिल. ये मॉडरेटली डिक्रीज करेंगे, थोड़ा सा उससे कम करेंगे. क्लास 1C जो ड्रग आता है दे विल डिक्रीज द strongly decrease the phase 0 slope. So marked decrease in the dV by dt of phase 0. So in that you have propafenone and flecainide. Because ये जो है class 1C they are a strong sodium ion channel blocker. ये क्या है, moderate sodium ion channel blocker. और class 1B क्या है, weak sodium ion channel blockers. That's why. Now ये हो गए class first. Class second drug क्या है, obviously beta blockers. Okay, class second drug is the beta blockers. Sotalol, propranolol, small. जो sotalol है that also has some class 3 property also. It also has a potassium channel blocking property. Now class C drug. Class 3 drug क्या होता है, they will increase the action potential. They will increase the duration of action potential. Class 3 drug will increase the duration of action potential. For example, amidaron, trondaron, dofetilide and ibutilide. So all these are known as a potassium channel openers. ये क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर. क्लास 3 ड्रग पोटेशियम चैनल ओपनर. नाउ क्लास 4 ड्रग क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. वेरापामिल, लिटियाजिम, निफेडेपिन, दीज आर नोन एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ये हो गए क्लास 4. अभी एंटी एरिथमिक ड्रग मेजर क्लासेस कितने होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स उसमें 3 टाइप आता है. सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में क्लास 1 बोलते हैं उसको, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C. क्लास 1A मतलब दे आर मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्विनिडीन, प्रोकानामाइड, डिसोपायरामाइड. क्लास 1B में वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर, लिडोकेन, फिनेटाइन एंड मैक्सिलेटिन. देन ये फिनेटाइन क्या है, इट इज आल्सो ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. लिडोकेन क्या है, इट इज अ लोकल एनेस्थेटिक. क्लास 1C में आता है स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर, फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनोन एंड मोरिसिजिन. फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनोन एंड मोरिसिजिन दे आर क्लास 1C. और क्लास सेकंड उसमें आता है बीटा ब्लॉकर, सोटेलॉल, प्रोपेनॉल. सोटेलॉल को क्या है, एडिशनल क्लास 3 एक्टिविटी. क्लास 3 में क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, अमीडारोन, ब्रेटिलियम टोसाइलेट. ये एडेंजिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स भी होता है, ब्रेटिलियम टोसाइलेट. नाउ क्लास 4 क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. सो इन दैट वेरापामिल, लिटियाजिम एंड निफेडेपिन. ओके, क्लास 5 में आता है एडेनोसिन डिकोक्सिन. ओके, नेक्स्ट विल सी अगेन सेम क्लासिफिकेशन. यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी-एरिथमिक ड्रग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास 1 क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. So they are sometimes known as a membrane stabilizer. They act on a phase 0, that is a rapid depolarization, and they will decrease the slope of phase 0. So further they divide into class 1A. तो they क्या करेंगे, prolongs the repolarization. So quinine, procainamide and disopyramide. Class 1B में आएगा आपका lidocaine, phenytoin. Okay, lignocaine and phenytoin. Lignocaine is also known as lidocaine. Mexiletine, procainamide, phenytoin, mexiletine and lidocaine. Class 1C में आएगा flecainide and propafenone. तो क्लास सेकंड में आएगा बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, क्लास 3 में आएगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स. सो अमीडारोन, ब्रेटिलियम टोसाइलेट, देन इबुटिलाइड, डोफेटिलाइड. क्लास 4 में आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल, लिटियाजिम एंड निफेडेपिन. क्लास 5 में आएगा पोटेशियम चैनल ओपनर्स. सो इन दैट यू हैव एडेनोसिन. एडेनोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैक्कार्डिया. इसके ऊपर ये याद रखो, एडेनोसिन जो है दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द paroxysmal supraventricular tachycardia. Diltiazem क्या है, it is a class 1 drug. So as per the biopharmaceutical classification, diltiazem class 1 drug है. So it is a dibenzodiazepine derivative. Verapamil क्या है, alkylamine derivative. याद रखना है आपको. Okay? Beryllium tosylate क्या है, beryllium tosylate is nothing but adrenergic neuron blocker. ठीक है, adrenergic neuron blocker भी है. Okay? You have to remember this. Now class 6 is known as a digoxin. Digoxin is a class 6. सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. क्लास 6 ड्रग कौन सा है, डिगोक्सिन. क्लास 5 कौन सा है, एडेनोसिन. क्लास 4 कौन सा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. क्लास 3 कौन सा है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर. क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स. क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. Clinically, arrhythmias can be classified into different types.
those drugs which are used in the treatment of supraventricular arrhythmia. So adenosine, verapamil and diltiazem. Then those drugs which are used in the ventricular as well as supraventricular tachycardia, okay, or arrhythmia. So amiodarone, beta blockers, disopyramide, quinidine and procainamide. So those drugs used in the ventricular arrhythmias, lignocaine, mexiletine, beryllium, tosylate. Then drug for paroxysmal supraventricular tachycardia. So adenosine and digitalis. Drug of choice होता है adenosine. Okay. For atrioventricular block, isoprenaline and atropine. अगर हार्ट ब्लॉक हो गया आपका उसमें आइसोप्रेनालिन देते हैं एंड एट्रोपिन देते हैं. तो याद रखो इन द एवी ब्लॉक आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक isoprenaline is a drug of choice and atropine is there. Okay? So lignocaine is a local anesthetic. You can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist exam. Read 2-3 times before exam and qualify 100% in a very short time. You can see we have very much promising result from past few years. Thousands of students they have already placed in the Niper and they will have very bright future. You can also join our GPAT Niper online course. Live lectures will be there, recorded lectures will be there, study material will be there, test series will be there. Everything is there in 8,000. Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector, read twice and qualify 100